नानाविकारिकारणैकनिपुणौ सद्धर्म संस्थापको साधा सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानामितकारिणो त्रिभुवने लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ मन्यौ शरण्यकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ नन्देन कालिकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ वन्दे वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis, namely Sri Sanatana Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus, they are honored all over the three worlds, and they are worth taking shelter of because they are absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. Shad Goswami's ki jai. So, we were into Nectar of Instruction text 2. Hopefully, all of you have remembered this. Atyahara prayasascha अत्याहारप्रयासश्च विहारभरतश्च prajalpo niyamagraha यजल्पो जल्पो नियमः निमग्रः janasangascha laulyam cha जनसङ्घश्च लौल्यं च जनसङ्घश्च लब्ध्वा षड्भिर bhaktir vinashyati. षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति तद्भिर्भक्ति विनश्यति So we shall read out the translation once again. So I'd like to request Kuntal Prabhu, could you kindly read this translation out? Yes, bro. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities: eating more than necessary or collecting more funds than required, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain, talking unnecessarily about mundane subject matters, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of the scriptures and working independently or whimsically, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness, and being greedy for mundane achievements. So there are six things. We saw the Sanskrit terminologies and also the meaning given by Srila Prabhupada in the translation. And we discussed first Atyahar, how Atyahar is overeating as well as over collection. So how both of this is very detrimental for devotional service, advancement in Krishna consciousness. So today we shall be seeing Atyahar, after that Prayasascha, collecting, where is that? It's over here. Prayasa. Collecting and influence. So I request some devotee. Yes, who can read this? Anaya Ghoshpur, could you go ahead with this?
Collecting. Yes, bro. Okay. Collecting and eating more than necessary also causes prayasa or unnecessary endeavor. By God's arrangement, anyone in any part of the world can live very peacefully if he has some land and a milk cow. There is no need for a man to move from one place to another to earn a livelihood, for one can produce food grains locally and get milk from cows. That can solve all economic problems. Fortunately, Fortunately, And man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness or the understanding of God, one's relationship with Him, and the ultimate goal of life, love of God. Unfortunately, so called civilized man, not caring for God realization, utilizes his intelligence to get more than necessary and simply eat to satisfy the tongue. By God's arrangement, there is sufficient scope for the production of milk and grains for human beings all over the world. But instead of using his higher intelligence to cultivate God consciousness, so called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. Thus, factories, slaughterhouses, brothels, and liquor shops are opened. If people are advised not to collect too many goods, eat too much, or work unnecessarily to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to a primitive way of life. Generally, people do not like to accept plain living and high thinking. That is their unfortunate position. Human life is meant for God realization, and the human being is given higher intelligence for this purpose. Those who believe that this higher intelligence is meant to attain a higher state should follow the instruction of the Vedic literature. By taking such instructions from higher authorities, one can actually become situated in perfect knowledge and give real meaning to life. In Srimad Bhagavatam 1.2.9, Sri Suta Goswami describes the proper human dharma in this way: Dharmasya hi apavargasya नार्थो अर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः. All occupational engagements, dharma, are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, one who is engaged in the ultimate occupational service, dharma, should never use material again, gain to cultivate sense gratification. Should never use material gain to cultivate sense gratification. The first step in human civilization consists of occupational engagements performed according to the scriptural injunctions. The higher intelligence of a human being should be trained to understand basic dharma. In human society, there are various religious conceptions characterized as Hindu, Christian, Hebrew, Mohammedan, Buddhist, and so on. For without religion, human society is no better than animal society. As stated above, dharmasya hi apavargasya nartho arthayo pakalpate. Religion is meant for attaining emancipation, not for getting bread. Sometimes human society manufactures a system of so-called religion aimed at material advancement, but that is far from the purpose of true dharma. Religion entails understanding the law of God because the proper execution of these laws ultimately leads one out of material entanglement. That is the true purpose of religion. Unfortunately, people accept religion for material prosperity because of atyahar or an excessive desire for such prosperity. True religion, however, instructs people to be satisfied with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. Even though we require economic development, true religion allows it only for supplying the bare necessities of material existence. Jivasya Tattva Jigyasa. The real purpose of life is to inquire about the absolute truth. If our endeavor, prayasa, is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. A spiritual aspirant should avoid mundane endeavor. thank you. Thank you so much, Prabhu. Very clear, huh? So Prabhupada's purports are very, very clear. Is there an ambiguity? So what you understand, Prabhu, by the
explanation of Srila Prabhupada. What Srila Prabhupada is actually expecting from not devotees for anyone. What Srila Prabhupada is expecting? Not only Srila Prabhupada is expecting, even Vedas also expect what? That human being is meant to do emancipation, right? Human being is supposed to do emancipation. Emancipation means he should go for liberation. Human body is actually meant for that. But because human being, the society nowadays has become so crazy, they want to do atyahar, right? So for doing atyahar, they need to do atyahar means ati प्रयास, right? अत्याहार करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? अत्याहार करने के लिए प्रयास भी ज्यादा करना पड़ता है, right? आहार करने के प्रयास नहीं करना। So the Prabhupada is telling here that because people are doing atyahar, so that's why they want to do atyahar, that's why they go for prayas, collecting and eating more than necessary. So ultimate goal of life is love of Godhead, but unfortunately, so-called civilized man, not caring for God realization, utilize his intelligence to get more than necessary and simply eat to satisfy the tongue. And what is the more than necessary? Prabhupada is pointing out here, factories, not required. Slaughterhouses, not required. Brothels, liquor shops, not required. Factories required? Prabhus? Factories are required. For eating, we need grains, food grains, which is produced in farm. For drinking milk, which is produced by mother dairy, right? Right? Or cows, Cows, bro. right? So anybody can have these two things and he can have a very happy life. But if you tell somebody that Prabhuji, have a simple life, then say, Prabhu, you are telling after doing BTech and MBA, I should go and do farming and do milking? This is ridiculous. But what you do, Prabhu? Prabhu, I will do from 9 to 5, not 9 to double 5, and I will break my head and I will cry every day. Just running after the deadlines, and that deadlines never get into life, always remain dead. The people are getting into industrialization, enterprises, and they are not happy actually. Forget about doing bhakti, they themselves are not happy into doing dharma. Dharma supposed to get you artha and the sense gratification. Even sense gratification is not getting done by the people nicely. Srimad Bhagavatam tells dharmasya hi apavargasya. Dharma means occupational activities should be done for liberation, apavargasya, not for pavarga, sense gratification. और आजकल की इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस में तो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, पैसा कमा के रखे खाने को टाइम नहीं है, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग, सिर्फ सोने को मिल जाए बहुत है। धर्मस्य ही आप वर्ग से नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थो अर्थायोपकल्पते, इन धर्म शुड लीड टू उपवर्ग, नार्थो अर्थाय, धर्म के यूजुअली धर्म से लोग क्या पाते हैं? अर्थ पाते हैं। बट श्रीमद् भागवतम टेल्स नो, धर्म शुड नॉट लीड टू यू अर्थ कल्पते, बट सपोज यू आर गेटिंग अर्थ, नार्थो से धर्म ही कांत से, इफ यू आर गेटिंग अर्थ, so utilize that artha into again doing dharma. What is that dharma? That is by which you can get to apavarga, liberation. So that is the purpose of life, but whole purpose of life is changed by industrial enterprises nowadays. Isn't it, Prabhu? What is the purpose of life projected for all of us from the beginning of our life? बेटा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, बेटा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, बस, and then you will do so much of sense gratification and all that.
and you will be a big person in the society. And this is what is being taught. And you will be the biggest Tyahari. You will have 10 cars, and you will have one one house in village and one house in city and one house in Delhi or somewhere, right? है कि नहीं? मतलब आप लोग सुन पा रहे हो या फिर मैं ऐसे बक 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 करते जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Yes, yes, नहीं sir. बहुत समझ सुन नहीं सुन रहे हैं ऐसा तो कैमरा खोल सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे भी. Some devotees open their camera. I like to congratulate you, Nitish, Prabhu, and Anay Prabhu. So yes, this is being taught to us, and it has been put into our DNA. And we think that unless we get to there, life is actually not fulfilled. But ultimate, we say, acme of dharma is to get to Brahminical standards. Simple living and high thinking. Simple living and high thinking. Whatever is required, that much to get. And think high. And what is high? What is the highest? Think about Krishna. Right? So, Prabhupada is writing, unfortunately, people accept religion for material prosperity. They do dharma for artha, and they do anartha. They do atyahar. They won't do just artha, but they do anartha. They create so much of atyahar. चाहिए एक फ्लैटरॉन टीवी, लगा दिए 5, है ना? चाहिए एक कार, लगा दिए 3-4 कार. कार की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? अगर कुछ भी, अगर यहाँ से वहां जाना है, सपोज 2 ब्लॉक जाना है, तो क्या चाहिए? कार चाहिए. 2 ब्लॉक जाना है तो भैया पैदल ही जा सकते हैं, है कि नहीं? कार, बाहर में बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको पकड़ के चले जाओ. लेकिन कार खरीद ली है, अब परेशान है कार का मेंटेनेंस में. कार मेंटेन नहीं है, देन 2-3 कार्स इन समवेयर इन गैरेज एंड सड़ रहा है. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ पीपल दोज हु गो फॉर अत्याचार, and whole life they simply try to maintain their status quo, artificial status quo, artificial needs, and they do प्रयास. प्रयास. तो श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं अत्याहार मतलब आहार, अति ज्यादा आहार. और दूसरा शब्द क्या है? प्रयास. प्रयास मतलब होता है प्रयास. प्रयास, आप लोग बोलेंगे कि प्रभु जी प्रयास तो हर चीज में चाहिए, है कि नहीं? प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? प्रयास को बोला जा रहा है कि इट इज डिटरमेंटल टू भक्ति. हाँ? भगवान स्वयं बोले हैं कि शरीर धारण करने के लिए प्रयास चाहिए, शरीर धारण करने के लिए हमें काम करना है. भगवत गीता में बताएं, एक शरीर यात्रा पिचते. हाँ? लेकिन यहाँ पे प्रयास, तो प्रयास मतलब यहाँ अति प्रयास, या फिर बोला जाए तो प्रकृष्ट रूपेण प्रयास, या फिर प्रकृष्ट रूपेण, पृष्ठ रूपेण आयास, प्रयास. अति प्रयास मीन्स ओवर एंडेवर फॉर मटेरियल थिंग्स. प्रयास मीन्स एंडेवर. सो प्रयास मीन्स एंडेवर, बट अति अत्याहार, अत्याहार वाला जो अति है वो उसको प्रयास में जोड़ के आप समझ सकते हैं कि अति प्रयास, टू मच एंडेवर. Too much endeavor, over endeavor on material things will surely kill our devotional service, right? So, ati prayasa klesha, ati prayasa will give us klesha, troublesome endeavor to obtain sense objects. That is called ati prayas. So, you see some different, our previous acharyas, what they say about prayas, and we will try to put some light over it. So, Srila Bhaktivinoda Thakur tells, the endeavor for attaining sense objects is called prayas, right? Endeavor for attaining sense object is called prayas. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj goes ahead and he describes very minutely what is called prayas. And he doesn't keep anything missed out of this material world, which could like be out of the definition of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Because when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj tells something, when he
takes everything, all universal activities he takes up. So what he says, Jnani Ganer Jnanabhyas Vidhi. For those who are Jnanis, is treasuring impersonal knowledge. So उनका ज्ञानाभ्यास विधि कर्मीर तपस्या व्रत आदि, जो कर्मी लोग हैं उनका तपस्या, कर्मी का तपस्या मतलब सब आ गया उसमें. Those who seek for material fruitive activities, so they are karmis. So karmis tapasya means everything comes into tapasya, like going and over endeavoring for material objects. I mean, artha in company and industry, that also comes in type of tapasya. Karmir tapasya vratadi. Unnavilasir stri putra dravinadi विषय यही प्रयास. दिस इज बांग्ला. तो अन्नाभिलाषित, जो वृत्त में और भी कृष्ण भक्ति को छोड़कर और जितनी भी अभिलाषा है, जैसे स्त्री पुत्र लक्ष्मी टाका, इसको कलेक्ट करने के लिए जो एंडेवर है, दैट इज कॉल्ड प्रयास. दैट इज कॉल्ड प्रयास अकॉर्डिंग टू शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज. द मल्टीफेरियस एफर्ट्स दैट पर्सन averse to bhakti puts for attaining a spouse, children, wealth, and other resources is called prayas. So, why prayas people are doing? Because, as La Prabhupada has told, they do not believe in Vedic standard. They do not believe in Vedic standard. Like, even though we have been in devotional service for many years, but do we really believe it? That our life is to have simple living and high thinking? नहीं 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 प्रभु जी, दोनों करना है हमें. बहुत बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन भी बनना है और बहुत बड़ा भगत भी बनना है कि नहीं? दोनों का. कितने लोग ऐसा नहीं सोचते हैं? हाथ उठाएं. सब लोग ऐसा सोचते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा. सो आई एम रेलेवेंट स्पीकर हियर. Yes, we want to do that. We want to do sense gratification also, and too much sense gratification, too much prayas, and we do Bhagavad. That's not possible, bro. Vedic ideally ईशावास्यम idam sarvam यत् किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मागिढ़ा कस्य सिद्धनम. Srila Prabhupada is writing in translation, everything animate and inanimate that is within this universe is controlled and owned by Lord. So one should therefore accept only those things necessary for himself. Necessary. There is a difference between what is called necessity and what is our want. Right? क्या हमारी क्या ग्रीडीनेस, जो हमारी चाहत है, चाहत हमारी कुछ भी हो सकती है. वी मे वांट एनीथिंग, वी मे वांट दैट एफिल टावर हमारे नाम पे हो जाता कभी. हमारे चाहत तो कुछ भी हो सकती है. देयर इज नो लिमिट ऑफ इट. बट वॉट एवर इज नेसेसरी, दैट इज द वैदिक आइडियल. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः. वॉट एवर इज नेसेसरी and what has been allotted very smoothly to you, very smoothly by God. This is very smoothly given to me. This particular job, okay. This particular thing to get money and fill my belly is very smoothly given to me. That is perfect. Tena taktena bhunjitha ma gridha kasya siddhana. And one should not accept encroach to another's property or encroach more than what is actually necessity for him. So otherwise, the whole purpose of human life is lost, right? If you do ati prayas for material sense gratification, then is there any time left for doing devotional service, Prabhu? Huh? No, Prabhu. Not left. तब वही फिर बच जाता है. हिंदी में प्रॉब्लम आता है. माय फादर यूज्ड टू टेल इट मेनी टाइम्स. आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास. The human form of life is meant for doing हरि भजन. लेकिन आए थे हरि भजन करने के लिए इस संसार में, लेकिन देखा गया उस आदमी को तो वो क्या करने लगा? ओटन लगे कपास. कपास मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? रुई. रुई बांग्ला की बोले, बांग्ला में क्या बोलते हैं रुई को? क्या बोलते हैं? तुलो.
हाँ, तुलो तुलो। तुलो तुलो तुलो। तो एक 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 कुछ लोग, कुछ एक कम्युनिटी होती है, वो क्या करती है कि सबके रजाई में से जो तूलो निकलता है उसको वो और भी क्या करते हैं उसको, दे दे डू प्रोसेसिंग, ए टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, there is a machine or something, they do processing of it, they make it more uh, vibrant, this tulo, that's called otan lagu kapas, okay. So आए थे, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन जब मनुष्य पहुंचता है संसार में, then he start doing अत्याहार, and just for doing अत्याहार he start doing what, अति प्रयास, right, and फिर हो जाता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, स्टार्टेड डूइंग अति प्रयास। तो जितने वैसे जरूरत है वैसे वैसे जितनी जरूरत है उतना प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन एक लिमिट होता है प्रयास का। और आजकल उस सारे प्रयास की लिमिट को हमारी कंपनियां हैं वो क्या करती है, वो बढ़ाती जाती हैं, राइट। सो आई शो यू दिस ग्राफ, वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ, दिख रहा है ये? जैसे टाइम बढ़ता है कंपनी में, लोगों का प्रयास भी बढ़ते जाता है। कंपनी बोलती है कि बेटा सैटरडे भी काम करो, तुम्हारा हम हाइक 50,000 बढ़ा देंगे, पैसा है कि नहीं, हाइक कर देंगे। तो बंदा को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है। टाइम बढ़ते जाता है, प्रयास ही बढ़ते जाता है, प्रयास ही बढ़ते जाता है। एक ऐसा टाइम पे आता है वहां पे उसका क्या होता है, सीधे धीरे 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 भगवत भक्ति नीचे होने लगता है, वो घुटन होने लगती है उसको, राइट। अति प्रयास, यहाँ से अति प्रयास चालू होता है, क्रिटिक करता है, और फिर जाके यहाँ पे इसका जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है वो टूट के गिर जाता है कभी कभार। पीपल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। सो भक्ति इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग को समझना है कि भक्ति पैसा कमाने से नहीं होता है। बोलेंगे प्रभु जी पैसा तो हमें डोनेशन करना पड़ता है ना। कभी कभार लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा के एक बार में स्टैक कर देंगे, उसके बाद फिर संन्यास ले लेंगे, उसके बाद बैठ के घर पे हरिभजन करेंगे। कितने लोगों का ऐसा मानना है? किसी का मानना नहीं। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जाते हैं अरेबियन कंट्री में, पैसा कमाएंगे खूब सारा, उसके बाद बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर मायापुर में सेटल हो जाएंगे। एक्चुअली ये ऐसी ऐसी फिजूल की वो ड्रीम देखते हैं लोग। तो थोड़ा सा अति प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से भगवत भक्ति करेंगे। ये बाद में पता चला कि भगवत भक्ति इज नॉट समथिंग, भगवत भक्ति इज नॉट डन बाय आवर ओन विल। भगवत भक्ति एक्चुअली bestowed by with whom the भगवत भक्ति is there. सो भगवत भक्ति के लिंब में श्रील रूप गोस्वामी 64 लिंब बताते हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें कहीं नहीं बताए हैं कि पैसा कमाना और डोनेशन देना भी एक लिंब है भगवत भक्ति का। नहीं है, इट्स नॉट द लिंब ऑफ भगवत भक्ति। धन शिष्यादि द्वारे या भक्ति उपादे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे अरे हाँ बैठे बैठे रहते हैं घर पे, और राधा कृष्ण का विग्रह रहता है, और कोई बाहर से आता है घंटी बजा के चला जाता है, पंडित जी पूजा कर दीजिए थोड़ा घर के मंदिर का, और उनका ऐसा भक्ति चलता है। सो दिस इज नॉट द वे ऑफ भक्ति। भक्ति एंड डिवोशनल सर्विस एंड इजी गोइंग कैनॉट गो टुगेदर। धन शिष्यादि द्वारे या भक्ति उपाद्यते विदुरत्वाद उत्तमता हान्या तस्य च अनंगता। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी चले। So bhakti, by making use of wealth, are actually far away from Uttama Bhakti. Making use of wealth. I'll earn a lot of money and then I will do devotional service. So then hardly any devotional service happens. Because devotional service is everything all about taking shelter of Krishna. And when the living entity out of illusory energy has taken shelter of his money,
And where is there a scope of doing taking shelter of Krishna? Is there any? There is none. So people, to create this all amenities, artificial amenities, they do a lot of endeavor, a lot of endeavor. In Bhagavatam, Bhagavan Sri Krishna himself tells to Uddhav ji that in the earning money is something, in the earning of money, in attaining the money, earning means labor, and attaining means when the salary comes at the end of month, attaining it. Then increasing the money. Okay, for 1 month, 1 year I am getting 30, 40,000 rupees per month. I have to increase to 70,000 rupees. So increasing the money. When money has come, then we need to protect it. Protecting the money. Then you have protected money, then you have to do something of it. उसको आप एक्सपेंस करना है कि नहीं? मनी को तो रख, बिकॉज मनी की तीन ही गति होती है, चाणक्य पंडित बोलते हैं। पैसा है मतलब पैसा का तीन ही गति है। क्या क्या तीन गति है? Either you do sense gratification out of it, भोग कर लो। सेकेंड गति is दान में दे दो। और तीसरा गति क्या है? क्षय क्षय नाश हो जाएगा। तीसरी तीन ही गति है। या तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लीजिए जब तक पैसा है बैंक में, दूसरा है दान दे दीजिए, दान तक दाने দিয়ে দেন, না হলে কি হবে? কি হবে গো? বেশি টাকা থাকলে নাশ হয়ে যাবে, হয়তো আপনার শরীরটা নাশ হয়ে গেল, বা या तो आप राम नाम सत्य हो गए, हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हो गया। अदरवाइज money has been lost by so many events like hospitals, doctors, and uh, advocates, वकील्स इस इसमें चला जाता है। सो धन की तीन ही गति होती है। धन से या फिर आप दान कर लीजिए, धन को आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा लीजिए, नहीं तो तीसरा होगा ही, वो नाश हो जाएगा। सो टू in every phase of dhan, in earning, in attaining, in increasing, in protecting, and even expense. Expense means utilizing it for either sense gratification or dhan, enjoyment of wealth. There is a labor, fear, anxiety, and delusion. That is Lord Sri Krishna's version. Lord himself tells in 11th canto. I'll show you this. अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यय नासोपभोग आयास त्रासस चिंता भ्रमो निर्नाम। In earning attainment, increasing protection expenses, loss and enjoyment of wealth, all men experience great labor, earning great labor, अटेनमेंट मिलेगा कि नहीं उसका भय है, इंक्रीजिंग बढ़ेगा कि नहीं एंजाइटी है, प्रोटेक्शन में भी एंजाइटी है, पता नहीं कोई लूट न ले हमारा पैसा, कोई इधर से उधर से डिजिटल माफिया पैसा ना उड़ा ले। देन एक्सपेंस करने में फियर है, डिल्यूजन है, किधर एक्सपेंस करें, बिविल्डरमेंट होता है, किधर लगा दें, इधर शेयर मार्केट में लगा दें या फिर क्या फिक्स डिपॉजिट कर दें, कि कहाँ लगा दें, कौन सा मार्केट में लगा दें जो पैसा और बढ़े, या फिर काला मार्केट में लगा दें। डिल्यूजन इन expenses also, and people they go for shopping also, there also so many things to purchase and they purchase it, do अत्याहार, अरे पैसा है तो कुछ अत्याहार कर ही देते हैं। So then atyahar leads to another prayas, and the cycle of prayas and atyahar goes ahead. All men experience great labor, fear, anxiety, and delusion because of this prayas. So nowadays it's a lot of prayas happening, a lot of prayas. Ugra karma jobs people are doing, and they are complaining to their spiritual authorities, प्रभु जी मेरा माला नहीं हुआ है कितने दिनों से, माला ही नहीं हुआ है, दीक्षा ले लिया, एक ही माला होता है, कभी 4 माला होता है, कभी 5 माला होता है, कभी कभार तो माला छूट ही जाता है।
क्या करें प्रभु जी? वाई? बिकॉज the whole industrial revolution is geared toward how people should do atyahar, consumerization. And for doing atyahar, let people do ati prayas. So only one, two people are enjoying very good life. And for them to enjoy very good life, lakhs of people are doing atyahar, not atyahar, ati prayas. What atyahar they will do? They don't have even time for taking bread. अति प्रयास। तो कुत्तों से भी जीवन उनका बदहाल हो गया है, ऐसा जीवन हो गया है, राइट? पीपल दे बिकम सो मच फ्राइड आउट इन जॉब्स, जैसे कुत्ते लोग तो आराम से बैठ के सो रहे हैं, ठीक टाइम पे उनको खाना कहीं ना कहीं मिल जाता है। हमारा जीवन तो कुत्तों से बदतर हो गया है, ऐसा कभी कभार उनको मन में आता है। So modern day ugra karma jobs are like this. So Bhagavatam very vividly describes these type of people as worse than dogs. स्ववृत्ति, स्ववृत्ति मतलब होता है कुत्तों का जीवन, स्ववृत्ति कुत्तों का पेशा। स्ववृत्तिर नीच सेवनम वर्जयताम सदा विप्रो। But those who are vipra means those who want to attain pragya, they want to attain Krishna consciousness, they want to go home back to God. They should not do this swavritti. Swavritti needs sevanam. Varjayet tam sada vipro. Engaging in service of low grade persons. कंपनी में कौन लोग होते हैं? हाई ग्रेड पर्सन होते हैं क्या? लो ग्रेड पर्सन। And working under them, engaging in service of low grade persons, however, is called a swavritti, profession of the dogs. But specifically, Brahmana, Kshatriyas, and Vaishyas should not engage in low and abominable service of Shudras. Srimad Bhagavatam is telling. So, unless one becomes Brahmana, it's very difficult to do Krishna consciousness. And how one becomes Brahmana? Guna karma vibhagasa, by guna and karma. But we are doing work of Sudra. How we can become Brahmana, Prabhu? And we want to do devotional service. एक तरफ डिवोशनल सर्विस का चाप, और उधर उधर से शूद्र वाला वर्क का चाप, कुत्ता का वर्क का चाप, और बीच में भगवत भक्ति हरि बोल हो जाती है। सत्य बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? भगवत कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का जो क्राइटेरिया है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोले भगवत गीता में? हाँ? गुण कर्म विभाग से बोले ना, क्या गुण है और क्या कर्म है। तो मेजोरिटी ऑफ लोग क्या कर्म कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे प्रभु जी आसमान देख रहे हैं, ये प्रभु जी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो शूद्र की प्रवृत्ति में ऑलरेडी हैं, और कुछ लोग जो नहीं है वो चाह रहे हैं कि मुझे शूद्र की प्रवृत्ति कब मिलेगी, मैं कब शूद्र बनूंगा। लेकिन कृष्ण भक्ति इज फॉर द ब्राह्मणर्स। कृष्ण भक्ति इज फॉर द ब्राह्मणर्स। यू हैव टू कम टू द ब्राह्मणिकल प्लान। सो this even dog is happier than them. That's what Srila Sanatana Goswami is telling. Those who say this is very uh, very tough sloka by Srila Sanatana Goswami. Like to read it? You will say that, my God, Sanatana Goswami is telling very tough thing. सेवा सवृत्तिर यह युक्ता न सम्यक तैर उदाहरितम स्वच्छंद चरिता क्वस्वा विक्रीतासु स्व की सेवक। Simple Sanskrit. Those who say that swavritti, accepting service like a Shudra or is a dog's life, are incorrect in their analysis. What? Incorrect in analysis. मतलब दूसरे की नौकरी करना वो कुत्ते के जीवन के बराबर है। अगर कोई बोलता है तो ये गलत है। कैसे गलत है? How can you ever compare a free and happily roaming dog with a miserable servant who has sold his life here for money? तो सनातन गोस्वामी कैसे आप कंपेयर कर सकते हो कुत्ते को जो कि आराम से बिंदास जीवन जी रहे हैं, वो हैप्पीली रोमिंग डॉग, मिजरेबल सर्वेंट जो अपने थोड़े से पैसे के लिए अपना पूरा जीवन ही किसी के हाथ में बेच दिया है।
There is no comparison out of it. So Brahmanas means they have their own life, and because of that, they're because of their own, they do something so that their life is go ahead, and their full focus is in devotion service. That's called Brahmanas. That's called Dvijas. Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas. So those who go for just selling their life bread to some people, it's very difficult for them to do devotion service. बहुत ही मिनिमल डिवोशन सर्विस कर पाते हैं. चैंटिंग 16 राउंड्स हो गया मतलब क्या कि क्या पहाड़ टूट गया. मैंने 7 समुंदर पार कर लिए, जैसे 16 माला हो गया अगर किसी का जॉब करते हुए. यस नो प्रभु, क्या मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ? पूरे शांति छाए छाई हुई अभी तक. ऐसा लग रहा है मतलब क्या. सो हाउ मच, सो थिंग इज दैट कितना खटना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, उसका कोई लिमिट है? अगर देखिए जॉब तो करना ही है आपको, कितना जॉब करना है, कितना जॉब करना है. तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा श्लोक है सुभाषित रत्न भंडागारम से, प्रभु जी कोट कर रहे थे. तो इसको पैमाना मान के हम लोग चल सकते हैं. हैप्पीनेस इन सिंप्लिसिटी अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम अनुत्सृज्य सताम वर्त्मा यत् स्वल्पम अपि तद् बहु. whatever little is obtained without giving pain to others, जो भी आपके जीवन में आता है दूसरों को दुख दिए बिना, विदाउट बेंडिंग ओवर बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रफियंस, और उचक्कों और ठगी लोगों और थर्ड क्लास लोगों के पीछे तू मैं चप्पल चाटने वाली काम को नहीं किए बिना, without giving up the path of saintly souls. And by doing that, if you are not able to associate with the devotees, if you are not able to follow the instructions of saintly people, if you are actually able to do it without giving up the path of saintly souls, is more than sufficient for us. यद स्वल्पम अपि तद बहु. ये सब चीज करते हुए अगर कुछ भी मिलता है वो समझना चाहिए कि बहुत मुझे मिला, अनेक टाका હોય છે. यदि हमरा सताम वर्तमा, we are following the path of devotees, अगत्वा खल नम्रता, खल लोगों के आगे विनम्र नहीं होते हुए, अकृत्वा पर संतापम, दूसरे जीवों को दुख नहीं देते हुए, अगर जो कुछ ही पैसा मिलता है जितना एंडेवर से, दैट मनी इज मोर देन इनफ. स्वल्पम अपि तद बहु. इवन दो इट इज स्मॉल, it's bahu, it's a lot. So simple life, that's what Srila Prabhupada is telling every time in this in Nectar instruction also. Prabhupada is telling simple life, eat simple things, grains, vegetables, fruits, milk products. Save your time for advancing in Krishna consciousness. Don't be implicated in ugra karma. Modern civilization is implicated in ugra karma. Yeah, vast machinery, everything complicated. Government is complicated, society is complicated. This is Prabhupada telling in one of the lectures on Bhagavatam. So everything is complicated. Government is complicated. You see, government is complicated. Economics rules are complicated. Foreign exchange complicated. Everything has become complicated. And in this complicated life, living in it, very difficult to remember Krishna and do devotion service. Hardly there is any time to for them. And in this way, the human form of life is lost. Simple. Like how in 25, 30 years they work, ugra karma, and after that they become old man. A company tell Baba, बूढ़ा आदमी बूढ़ा बैल से कुछ काम नहीं हुआ, उसको भगाओ. So they will take you out from the company and you're just waiting for the death. And you don't get prema, Krishna Bhakti. Then finish. Hari Hari Vifale Janama Govaino.
Manusha janama paya Radha Krishna bhajiya Janiya Surya Vishakhainu. So this is why it happens. Hare Krishna Prabhu. So it's 6 o'clock now. So we'll take a pause here and we'll open for if any discussion, anything to say. Then we shall chant Hare Krishna mantra one down together. And next day we'll try to take up Prajalpa. Hare Krishna.